Data structures and algorithms. The two terms, data structures and algorithms, they are mostly used altogether. When we talk about data structure, we will also be talking about algorithms, or when we are talking about algorithms, we'll also be talking about data structures because they are very much related to each other. Data structures, we can say that they cannot be discussed in isolation to algorithm, or algorithms cannot be discussed without the discussion of data structures. So data structure, what it is actually the organization or representation of the data in computer's memory. So algorithms work on the data. Algorithms manipulate the data because for algorithms, one of the main thing they need, it is the input. So input which we give to algorithms, it must be represented in computer's memory. So that representation is actually the data structure. So representing information is fundamental to computer science. Means we represent a lot of information. We give a lot of data into a computer, so it must have some way to be represented in computer's memory. So the data structure is the way, the data structure is organization of the data in computer's memory. Then how the data is manipulated, how the data is processed is actually with the help of algorithms. So the primary purpose of most computer programs is not to just perform calculations, but to store and retrieve information usually as fast as possible. As we discussed yesterday as well, that most of the organizations use computers just for storing and retrieving the data. In most of the businesses, the purpose of the use of computers is to store and retrieve the information, but do not perform calculation. It is the computer scientist who performs the calculations. So the study of data structures and algorithms that manipulate that data is at heart of the computer science. So the study in which we manipulate the data is one of the core matter of computer science. Now, selection of data structure. How do we select a particular data structure for a particular task? When we perform certain tasks, because we do write the algorithms for performing a particular task, we when we use a computer, the, we have some goal, we have some purpose for that. So we have a task to be solved or a problem to be solved with computer. So for performing that particular task, we need the data. And when we need the data need to be organized into computers. So how the data should be organized? It is a matter of data structure. Means we can organize same data in different ways. There are multiple data structures for the same data, for organization of the same data. So the selection of data structure is one of the most important thing for algorithm analysis.
the selection of a particular data structure for a particular task. It is much important as an algorithm is. Means जो data structure particular हम select करें for a particular task, उसकी importance similarly उसी तरह है as we select a particular algorithm. So the selection of data structure is of importance in computer science. So when selection of a data structure is performed, we have to keep certain things in mind. When selecting a data structure to solve a particular problem, we should follow these steps. Why the data structures are needed? Because we are going to solve a particular problem with computer. अब वो problem क्या है? It is important to understand the nature of problem before selection of a particular data structure. So for that, we have to analyze the problem. Means we have to investigate, we have to understand the problem, we have to explore the problem. So how do we explore it? How do we understand the problem? For that, we have to first clearly make the picture of that problem, what the problem we are going to solve. We have to clearly understand that problem. Then we have to determine that what kind of operations we are going to perform on that data structure. यानी कि जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जाहिर बात है प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें छोटे छोटे डिफरेंट बेसिक ऑपरेशंस आर देयर. So we have to determine that which basic operations are going to be performed. So for that, we have to study the problem in more details. Okay, what basic operations will be needed? What basic operations we are going to perform on the data? So these basic operations you have already studied in the course of data structures. They include the insertion of data in a particular data structure. Yani ke these are the same operations that we have studied in data structures. Insertion of a data in a data structure, deleting a data element from the data structure, finding or searching a particular data item, or sorting the data into some order and so on. So these are the basic operations which are performed on the data structures. So we have to first analyze, we have to first determine that what kind of operations we are going to perform on that data structure in order to select a particular data structure. Then we have to quantify the resource constraints for each operation. So what does this mean? Quantify the resource constraints. Quantify means we have to estimate, we have to calculate the resource constraints. यानी कि अब resources कौन से हो गए? We know that we have two resources. They include the time and the space. So we have to specify, we have to determine that, for example, for inserting a particular data item, how much time will be needed. Yani ke, for example, you are familiar with linked list and arrays, right? So when we perform insertion into the data structure, suppose we are supposed to add a new item in the array in the beginning. So what happens? How you quantify that operation on array? So when we have to insert a new item in the beginning of array, so how many steps will be needed, or how much time will be needed? For example,
when we want to add a new item in the beginning, so what happens? Do you remember that? Okay, what happens when we insert a new item in the beginning of data structure? Can anyone tell me? You can write in chat board. So when we insert a new item in the array in the beginning, then what happens that all the elements need to be moved one position downward. So when we are supposed to use array and we have to perform insertion in the beginning, then what happens that all the elements will move one position downward. So this is the thing to quantify, right? Okay, when we are using, if we are using array for our data, then if we have to add a new item in the beginning, then all the items will need to be moved one position downward. So we have to keep in mind that agar we are choosing, if we are selecting the array data structure, then this must happen. Similarly, if instead of array, we are using linked list for the same purpose, then for inserting a new item in the beginning, what happens? Does that also move all the elements or few elements or what? If you remember, then it does not move any item from its place. In this, in linked list insertion, only the addresses, the pointers to the addresses, to the elements are just adjusting. But no data moves from its original address. Everything is kept on its place. What happens that when we add a new element in the linked list, we claim the address for that, यानी कि उसके लिए new address हमें चाहिए होती है, वो हम लेते हैं मेमोरी से, because in linked list, the linked list is dynamic structure. उसमें क्या होता है कि एड्रेसेस जब जरूरत पड़ती है उस टाइम पे हम उसके लिए मेमोरी क्लेम करते हैं. देन क्या करते हैं कि भाई जो भी हमें एड्रेस मिली, जहां कहीं पे भी मिली, क्योंकि एरे में क्या है कि एरे एलिमेंट्स दे ऑक्यूपाई द कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक. एक बिग ब्लॉक होता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स उस में कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में होते हैं. while linked list elements क्या होते हैं, they can be at different locations. So because it is a dynamic structure, so उस dynamic structure की वजह से क्या है कि कोई भी एलिमेंट कहीं पे भी हो सकता है, पर उसका पॉइंटर हम दे देते हैं. अब क्या होता है कि अगर हम न्यू एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, अब लिंक लिस्ट में यू नो के वी हैव अ स्टार्ट पॉइंटर. स्टार्ट पॉइंटर क्या होता है कि इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. अब क्या होगा कि न्यू एलिमेंट हम जब ऐड करेंगे तो उसके लिए हम मेमोरी से मेमोरी लेंगे, उसके लिए मेमोरी एलोकेट करवाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से वो मेमोरी लेंगे. देन क्या होगा कि जो न्यू एलिमेंट या जो न्यू एड्रेस हमें मिली है उसमें हम न्यू आइटम ऐड करेंगे. फिर उसकी जो एड्रेस पॉइंटर है उसमें हम फर्स्ट वाले एलिमेंट की एड्रेस देंगे और स्टार्ट में जो जो स्टार्ट पॉइंटर है उसको जो न्यू एलिमेंट ऐड किया है उसकी एड्रेस दे देंगे. दैट्स इट. बाकी कोई एलिमेंट
किसी कोई अपनी जगह से मूव नहीं होगा, हर कोई एलिमेंट अपनी जगह पे होगा। सिर्फ क्या हमने किया कि पहला एलिमेंट जो हमने इंसर्ट किया उसको पहले वाले की एड्रेस दे दी, और जो न्यू एलिमेंट हमने क्रिएट किया उसकी एड्रेस हमने स्टार्ट पॉइंटर को दे दी, दैट्स इट। जबकि एरे इंसर्शन में हमने क्या किया कि क्योंकि वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस ऑक्यूपाई करते हैं, हमें पहली लोकेशन पे अगर न्यू आइटम इंसर्ट करना है तो क्या करना होगा कि हमें लास्ट वाले आइटम को नेक्स्ट पोजीशन पे करना होगा मूव, सेकंड लास्ट को लास्ट वाले की जगह पे, एंड सो ऑन। तो यानी कि जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले की जगह पे आ जाएगा, सेकंड वाला थर्ड, एंड सो एंड सो। ठीक है, तो इस तरह से हम पहली लोकेशन पे जो है वो न्यू आइटम इंसर्ट कर सकते हैं, जबकि दिस डज नॉट हैपन इन linked list. So whenever we have a problem in this, we need the list. We need to have a list. ठीक है, then we have to decide which list should we use. Should we use array or we should go for linked list. अब ये डिसाइड करने के लिए हमें देखना होगा कि क्या यहाँ पे बार बार इंसर्शन तो नहीं हो रही। अगर इंसर्शन बार बार हो रही है तो यानी कि मे बी इंसर्शन तो किसी भी रैंडम लोकेशन पे हमें करनी पड़ रही है। तो उसके लिए अगर हम एरे यूज कर रहे हैं तो बार बार हमें जो डेटा आइटम्स हैं उनको फ्रीक्वेंटली आगे मूव करना होगा। अगर सिमिलरली अगर हमें डिलीशन भी परफॉर्म करनी पड़ रही है एरे में, तो उसमें भी यही होता है कि उसमें भी हमें ये होता है कि डेटा जो है वो जो है बैकवर्ड मूव करनी पड़ती है, यानी कि उसको डेटा को जो है वन पोजीशन अपवर्ड उसको मूव करना पड़ता है। अब हमें ये देखना होगा कि हम पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। देन उन ऑपरेशंस को हम क्वांटिफाई करेंगे कि भाई ये ऑपरेशन अगर लिंक लिस्ट से परफॉर्म किया जा रहा है तो ये चीज होती है, एरे से किया जाता है तो ये होता है। अब हमें जहन में हमारे जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई हाँ इंसर्शन होगी, और अगर हम एरे यूज कर रहे हैं तो ये होगा, इंसर्शन होगी, और अगर हम लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं तो ये होगा। We should be mentally prepared for that. अब अगर ये सारी पिक्चर हमारे जहन में क्लियर है, देन अब हम पे है कि हम क्या यूज करें, लिंक लिस्ट यूज करें या जो है वो एरे यूज करें। So select the data structure that meets these requirements. अब क्या हो गया कि भाई अब आपको पता है कि भाई जो जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं उनके जो मेरिट्स और डीमेरिट्स ये हैं, यानी कि उनकी जो कॉस्ट है क्वांटिफाई करने का, या मतलब ये है कि कॉस्ट यानी कि टाइम उसमें कितना लग रहा है या उसकी स्पेस कितनी जा रही है, तो ये हमें जहन में होगा। अब देखें यहाँ पे हमने जो है वो इंसर्शन की कॉस्ट की हमने बात की, उसके अलावा स्पेस का भी हमें देखना है कि लिंक लिस्ट कितनी स्पेस लेता है या जो है वो एरे कितनी स्पेस लेता है। अब यू नो कि लिंक लिस्ट हमारा जो है वो डायनामिक स्ट्रक्चर है, यानी कि एलिमेंट्स जब जब हम न्यू ऐड करते जाएंगे न्यू एलिमेंट्स के लिए स्पेस उसी टाइम पे हम क्लेम करते जाएंगे। जबकि एरे में क्या होता है कि इट इज स्टैटिक स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता है कि वी हैव टू रिजर्व ऑल द एड्रेसेस एट द क्रिएशन टाइम, यानी कि जब हम एरे क्रिएट करेंगे उस टाइम पे हमें तमाम डेटा जो है और उसकी एड्रेसेस तमाम एलिमेंट्स के लिए रिजर्व करनी होती है। अब देखिए कि इस सूरत में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमारे लिए बेहतर है, यानी कि हमें तमाम एस्पेक्ट्स से we have to analyze our problem
we have to analyze our problem from all angles. तमाम जो भी हमारे एस्पेक्ट्स हैं उससे हमें जो है उसको देखना होगा। तो इस सूरत में हमें क्या करना होगा कि भाई जो मुख्तलिफ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनकी सबकी हमें जो है वो देखना होगा कि जो जो ऑपरेशन जिस फॉर्म में परफॉर्म हो रहा है उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है और कितनी स्पेस लग रही है। When we are prepared for that, then we will choose a particular data structure.